Hello and welcome everyone. I'm your science teacher Himlata Chandolia, class 8. Today we are going to continue chapter number 17, stars in the solar system. We already had discussed few things about this chapter in our previous video. So students, today we are going to learn about a very interesting topic, that is constellation and सोलार सिस्टम. क्लास 8. अब सोलार सिस्टम के बारे में हमने थोड़ी बहुत चीज़ें पहले पढ़ ली हैं और कुछ हम हमारे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे. बट हियर अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज कॉन्स्टेलेशन. स्टूडेंट्स, व्हेन यू ऑब्जर्व स्काई इन द नाइट, most probably after 11 p.m., students, you will observe that a group of stars form different recognizable shapes in the sky, isn't it? Have a look here. This is the simple map which is formed by a group of stars, and these group of stars are forming different shapes. Have a look here. So what is this? This is कॉन्स्टेलेशन. और अगर हम इंडियन टर्मिनोलॉजी की बात करें तो हम इसे नक्षत्र कहते हैं. एंड टिल नाउ मोस्ट प्रोबेबली 88 constellations are found and we already have named them. So students, what is constellation? Students, the stars forming a group that has a recognizable shape is called constellation. Again, have a look here. We are having different constellations like Great Bear, Orion, Cassiopeia, Leo Major. एग्जैक्टली होता क्या है, डिफरेंट जो स्टार्स हैं ये एक सीक्वेंस में हमें अरेंज नज़र आते हैं एंड दे आर फॉर्मिंग अ शेप. ओके, एंड बाय रिकॉग्नाइजिंग दैम कि हाँ ये ऐसा दिख रहा है, वी नेम्ड इट. Clear everybody? So students, constellations were devised by ancient people to be able to recognize stars in the sky. The shapes of the constellation resemble objects familiar to those people. Yes, देखो बच्चा, हम चीज़ों को रिजेंबल किससे करते हैं? जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जो हमारे डे टू डे लाइफ में काम में आते हैं. तो हम क्या करते हैं, उन स्टार्स को, द ग्रुप ऑफ स्टार्स को रिलेट करते हैं हमारे डेली ऑब्जेक्ट से जिनको हम काम में लेते हैं. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टेलेशन, दैट इज ऊर्जा मेजर. और इसके बहुत सारे नाम हैं. वी कॉल इट ग्रेट बियर, वी कॉल इट डिपर, वी कॉल इट सप्तऋषि. So student, one of the most famous constellation which you can see during summers time in the early part of the night is Ursa Major. Have a look. आसमान में आपको ये ऐसे दिखता है. Clear? Most probably we found there are 7 prominent stars. ठीक है? And just because of this shape, it is having different names. What are the different names? It is also known as Big Dipper. Have a look. Big Dipper. Dipper means that we dip it into any pot and we just pick out anything. Okay? पुराने ज़माने में लोग डिपर को पानी पीने के लिए काम में लेते थे. मैंने पहले ही बताया, हम हमारे कॉन्स्टेलेशंस को नाम किससे देते हैं? जो हमारे डे टू डे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम काम में लेते हैं, हम उनसे को रिलेट करके उनको नाम देते हैं. The Great Bear. Yes, have a look here again. It resembles like that a bear is present in the sky. Okay? और सप्तऋषि. देखो, सप्तऋषि. सप्त means 7 and ऋषि मतलब जो हमारे ऋषि होते हैं. Clear everyone? ऋषि मुनि. So students, basically in this figure, in this constellation, there are 7 prominent stars. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. That's why we called it Sapt Rishi. Okay? There are 7 prominent stars in this constellation. Clear everybody? Students, it appears like a big ladle or a question mark. Yes. देखो, ये
क्वेश्चन मार्क भी दिखता है. अगर हम इस शेप को टिल्ट कर दें, then it will look like this. So हमारा क्वेश्चन मार्क भी तो ऐसा ही होता है जब हम उसको बनाते हैं. Clear everybody? समझ में आ गया? There are 3 stars in the handle of the ladle and 4 in its bowl. Yes, have a look here. This is the handle. So number 1, number 2 and number 3. ये 3 prominent star हैं इसके handle में और जो 4 remaining stars हैं वो हैं इसके bowl like structure में. So number 4, number 5, number 6, number 7. So total number of stars present in Ursa Major is, how many stars are there? There are 7 stars, and that's why we called it Sapt Rishi. Clear everyone? Dipper used for drinking water in ancient time. It was resembling that shape. Clear everybody? Students, in all ancient cultures, very interesting mythological stories have been associated with various constellation. Yes, देखो हमारा जो आसमान है, चाहे हम मून की बात करें, चाहे हम स्टार्स की बात करें, चाहे हम सन की बात करें, चाहे हम हमारे प्लैनेट अर्थ की बात करें, तो सबसे कुछ ना कुछ रिलेटेड मैथोलॉजिकल स्टोरीज हैं. Clear everyone? So the ancient story or the mythological story which is related with the Usha Major or Saptrishi is that Saptrishi has been associated with 7 well-known ancient Indian sages or rishis. Yes, the 7 prominent star in Usha Major represent the 7 ancient Indian sages. Clear everyone? Have a look here. देखो ऐसे ही 7 prominent stars हैं हमारे Usha Major में, Great Bear में, or we can say that Big Dipper, isn't it? So here these 7 stars according to our Indian mythological stories are representing the 7 sages. Clear? जैसे मरीचि, वशिष्ठा, अत्रि. So there are 7 sages which are represented by the 7 stars. Clear everyone? Students, according to the ancient mythology, the 7 sages who form the Saptrishi preserve the eternal knowledge of Vedas and explain it to the people in every new age. Clear everybody? So I hope the constellation Usha Major is clear in everybody's mind. But students, there are so many questions which should arise in your mind that the shape of these constellations remains same in the sky forever, or they are also moving from one direction to another. For understanding these questions, students, we have to perform an activity, and by doing this activity, we can get our answers, isn't it? So students, what we have to do in this activity? We have to observe this constellation for a few hours. Yes, which constellation? You can observe Usha Major. Clear everyone? So students, there are so many questions. अब first question क्या है? Do you find any change in its shape? Yes. When you had observed the Usha Major for 2 or 3 hours, then you are able to answer these questions. सबसे important question, क्या इनकी shape में कोई change आता है? You have to answer here, but I am giving you the answer. Don't worry about that. The next question, do you find any change in its position? It is also a very interesting question. Students, देखो ये जो constellation है ना, मैंने आपको पहले ही बताया, हम इनको नाम देते हैं जैसे शेप में ये हमें अपीयर होते हैं और उन अपीयरेंस को हम रिजेंबल करते हैं हमारे डेली ऑब्जेक्ट से जिनको हम काम में लेते हैं. इसका मतलब ये है कि इनका जो शेप है वो चेंज नहीं होता है. Clear everyone? But do you find any change in its position? Yes, there is change in their position because as our Earth rotates from west to east, like other stars, they are also rotates from east to west. Clear everyone? So your answers are here. We will observe that the shape of constellation remains the same. वो सप्तऋषि है, वो उषा मेजर है, वो का वही रहेगा, वो चम्मच जैसा ही दिखेगा, वो क्वेश्चन मार्क जैसा ही दिखेगा. इट विल अपीयर लाइक अ लैडल. क्लियर एवरीवन?
We will also find that constellation appears to move in the sky from east to west. Very important question class 8. ध्यान रखिएगा. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब भी हम कॉन्स्टलेशंस को ऑब्जर्व करते हैं तो वो आपको कौन सी डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखते हैं. एंड योर आंसर इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. Clear everybody? Students, now let's do another activity which will help us to locate the pole star. Everybody knows the pole star, isn't it? So student, how we can locate the pole star? For that again we have to perform activity. We can locate the pole star with the help of Usha measure. Clear everyone? That's why it is an important constellation. देखो बच्चा, this activity should be performed on a clear moonless night during summer at about 9 p.m. These are the conditions for locating the pole star. सबसे पहले moonless night होनी चाहिए. Summers में करिए near around after 9 p.m. Okay? Student, what we have to do? देखो बच्चा, look towards the northern part of the sky. Okay, यहाँ ध्यान दीजिए. We have to observe the Usha measure in the northern part of the sky and identify the Usha measure. Clear everyone? Look at the two stars at the end of Usha measure. Have a look here. अब लास्ट के two stars कहाँ हैं बच्चा? Number 1 and number 2. Clear? जो इसके बाउल वाले हिस्से में है. Imagine a straight line passing through these stars. Yes, now you have to imagine a line जो इन दोनों stars से pass हो रही है. Clear? Is it understood? Student, now what you have to do? You have to extend this line in the north direction. Clear everyone? North direction में हम इस line को इतना आगे तक लेके जाएंगे जितना डिस्टेंस हम उसको कंटिन्यू करेंगे, जितना डिस्टेंस इन दोनों स्टार्स के बीच का है उसका 5 times. Clear everyone? Extend this imaginary line towards the north direction. We are making that imaginary line here. And this imaginary line is about 5 times the distance between the two stars. इन दो तारों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो इसका 5 times होगा. Clear? This line will lead to a star which is not too bright, and this star is the pole star. जब हम नॉर्थ डायरेक्शन में इस इमेजिनरी लाइन को आगे तक लेके जाते हैं, ये इमेजिनरी लाइन जाकर लीड करती है एक स्टार पे जो ज़्यादा ब्राइट नहीं है, एंड वी कॉल इट पोल स्टार. Clear everybody? Class, observe the pole star for some time. Yes, you have to observe this pole star for some time and you will find out that like other stars, this star doesn't appear to move in any direction, isn't it? So students, note that it does not move at all as other stars drift from east to west. In fact, all the stars appears to revolve around the pole star. Clear everyone? Student, you also have to note that the pole star is not visible from the southern hemisphere. समझ में आ गया? क्योंकि हम पोल स्टार को कहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं? नॉर्दर्न डायरेक्शन में. क्लियर एवरीबॉडी? इसलिए ये पोल स्टार है, ये विजिबल नहीं होता southern hemisphere से. Clear everyone? Some of the northern constellation like Ursa Major may also not be visible from the some points in the southern hemisphere. Yes, देखो हमारा जो Ursa Major है ये भी क्या है? नॉर्दर्न पार्ट का कॉन्स्टलेशन है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी है कि सदर्न हेमिस्फीयर के कुछ पार्ट्स से हमें ऊषा मेजर नहीं दिखाई दे. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं अनदर इंटरेस्टिंग कॉन्स्टलेशन एंड दैट इज ऑरियन. लाइक ऊषा मेजर, ऑरियन के भी नाम हैं. कुछ लोग इसे हंटर कहते हैं क्योंकि इसका शेप जो है वो हंटर जैसा अपीयर होता है. क्लियर एवरीवन? लाइक
Ursa Major, it is also having 7 or 8 prominent stars. Clear everyone? So student, Orion is another well-known constellation that can be seen during winter in the late evenings. It is one of the most magnificent constellation in the sky. It also has 7 or 8 bright stars. Clear everyone? समझ में आ रहा है? Students, have a look here. This is Orion. इसको देखो, इसका जो शेप है ये अपीयर करता है कि कोई हंटर हंट कर रहा है. Clear everyone? Orion is also called hunter. Okay, another name. The 3 middle stars represent the belt of the hunter. Yes, number 1, number 2, number 3. ये देखो, ये 3 stars क्या हैं? Hunter के belt को represent करते हैं. 4 or 5 bright stars appear to be arranged in the form of a quadrilateral. Yes, 3 here and 2 here. Clear everyone? Shape समझ में आ गया? Student, as we locate the pole star with the help of Ursa Major constellation, in the same manner we can locate another bright star of our sky with the help of Orion and the star Sirius, और कभी कभी हम इसको Sirius भी pronounce करते हैं, which is the brightest star in the sky, is located close to Orion. अब इसको लोकेट करने के लिए हमें क्या करना है? टू लोकेट साइरस, इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 3 मिडल स्टार्स ऑफ Orion. Have a look here. These are 3 middle stars which are present or which are forming a belt of the hunter. Clear? यहाँ से हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, या हम जब इसको देखते हैं तब हम इसको फील करेंगे. Students, what we have to do? You have to look along this line towards the east. So you have to locate it in the east direction. Clear? This line will lead you to a very bright star, and this star is Sirius. जब हम ईस्ट में इस लाइन को इमेजिन करेंगे, then this line will lead you to this bright star, and this is Sirius. अब बात करते हैं दूसरे कॉन्स्टेलेशन की. स्टूडेंट, कैसियोपिया इज अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टेलेशन इन द नॉर्दर्न स्काई. देखो, हैव अ लुक हियर, इट इज लुकिंग लाइक दिस. ओके, अब इस शेप को आप बच्चा अगर इधर से ऑब्जर्व करते हो तो ये हमें नजर आ रहा है एम. अगर मैं इसको यहाँ से देखती हूँ तो ठीक है, इट इज जस्ट डिसऑर्डेड एम. ठीक है, यहाँ से मैं इसको देख रही हूँ जहाँ मैं ऑलरेडी अपनी पोजीशन में हूँ, then it is looking like W. Clear everybody? It is visible during winter in the early part of night. It look like a distorted letter W or M. So these 3 constellations are clear in everybody's mind. Students, did you know a constellation does not have only 5 to 10 stars, but it is a group of many stars. लेकिन जो prominent stars होते हैं वही हमें naked eye से नजर आते हैं. Clear everyone? It has a large number of stars. However, we can see only the bright stars in constellation with our naked eye. All the stars which make up a constellation are not at the same distance. Yes, आसमान में दिखने वाले जितने भी तारे हैं ये सब एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे नहीं है, बट ये हमें अपीयर होते हैं कि हाँ ये सेम डिस्टेंस में है, बिकॉज दे आर इन समहाउ सीक्वेंसेस. क्लियर एवरीवन? They are just in the same line of sight in the sky. Clear everybody? Students, let's discuss about a very important topic of this book is the solar system. हमारा सोलार सिस्टम बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो हमें बहुत सारा नॉलेज गेन करना है हमारे सोलार सिस्टम के बारे में. स्टूडेंट्स, वी नो दैट आवर सोलार सिस्टम इज कंसिस्टिंग ऑफ आवर सन, our planets,
comets, asteroids, and there are so many other things. So we will discuss solar system in a big way. Students, as we know that the sun, the celestial bodies which revolve around it form the solar system. It consists of large number of such bodies such as planets, comets, asteroids and meteors. समझ में आ रहा है? तो अब हम किस किस के बारे में पढ़ने वाले हैं? We are going to discuss about the planets, comets, asteroids and meteors. Clear everyone? Students, the gravitational attraction between the sun and these objects keep them revolving around it. Yes, as you already had seen कि ये जितने भी सेलेशियल बॉडीज़ हैं ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं और ये गिरती नहीं हैं. इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. क्लियर एवरीवन? The 8 planets in their order of distance from the sun are, and I hope ये सबको आता है. Very first is Mercury, second one is Venus, third one is Earth, fourth one is Mars, then Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Clear? Repeat them again. Number 1, Mercury. Number 2, Venus. Number 3, Earth. 4th, Mars. 5th, Jupiter. 6th, Saturn. 7th, Uranus. And 8th is Neptune. Clear everyone? Have a look. This is our beautiful solar system. Clear everyone? आगे समझ में? Students, have you ever heard that कि earlier our solar system is having 9 planets? Isn't it? So students, till 2006 there were 9 planets in the solar system and the Pluto was the farthest planet from the sun. In 2006 the International Astronomical Union adopted a new definition of a planet और उस डेफिनेशन में हमारा ये जो प्लूटो है ये फिट नहीं बैठा एंड प्लूटो डज नॉट फिट दिस डेफिनेशन. It is no longer a planet of the solar system. इसलिए 2006 तक हमारे solar system में हम 9 planets को count करते थे, but after that we are having 8 planets in our solar system. Is it clear everyone? Students, now some members of the solar family, a very important and the biggest one is our sun. Sun is the nearest star from us. Yes, we already know that it is a star और ये हमारे सबसे ज़्यादा करीब है इसलिए ये सबसे ज़्यादा bright नज़र आता है और सबसे ज़्यादा बड़ा नज़र आता है. Clear everyone? It is continuously emitting huge amount of heat and light. Clear everybody? And just because of this heat and light, life is possible on earth. Clear everyone? The sun is the source of almost all energy on earth. In fact, sun is the main source of heat and light for all the planets also. Clear everybody? Students, अब हम डिस्कस करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे सोलार सिस्टम का, वो हैं उसके planets. How many planets are there in our solar system? There are 8 planets. So students, the planets look like stars, but they do not have light of their own. They merely reflect the sunlight that falls on them. The simplest method of identifying the stars and the planet is that कि जो stars होते हैं वो twinkle करते हैं और planets twinkle नहीं करते हैं. Clear everyone? The simplest method of identifying planets from star is that star twinkle whereas planet do not reflect the light that falls on them. Clear everyone? समझ में आ गया? Also the planets keep changing their position with respect to the stars. A planet has a definite path in which it revolves around the sun और उस path को हम क्या कहते हैं? देखो बच्चा, this is your sun and your planets are revolving around the sun.
ठीक है, यहाँ पर मान लो मर्क्यूरी है, यहाँ पर वीनस है, यहाँ अर्थ है. दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ पाथ एंड दैट पाथ इज कॉल्ड एन ऑर्बिट. क्लियर एवरीबॉडी? Students, the time taken by a planet to complete one revolution is called its period of revolution. और हमारी अर्थ भी ऐसे ही एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है 1 ईयर में. Clear everyone? The period of revolution increases as the distance of the planet increases from the sun. Yes, देखो रिवोल्यूशन मान लो सपोज दिस इज सन. रिवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड है बच्चा वो तब इंक्रीज होता है जब प्लैनेट और सन के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा. जितना करीब होगा उतना रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड कम होगा, जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ही उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ज़्यादा होगा. क्लियर एवरीवन? Why the planets do not collide while revolving around the sun? This is very interesting question. Yes. देखो, जब सारे के सारे प्लैनेट्स सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, देखो चक्कर लगा रहे हैं, अदर जो सेलेशियल बॉडीज़ है वो भी लगा रही हैं, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन. ठीक है, बट दे डू नॉट कोलाइड, वो टकराते नहीं हैं आपस में, ये भी तो है. ओके, सो फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस लेट्स परफॉर्म अ activity. Class, what you have to do, draw 4 circles of radii 1 meter, 1.8 meter, 2.5 meter and 3.8 meter, all having a common center. Have a look here like this. ये simple इनका common center है और इसकी चारों तरफ आपने 4 radii बना ली. Clear everyone? Ask one of your friends to stand in the center and represent the sun, and your 4 other friends may represent the 4 planets like Mercury, Venus, Earth and Mars. Have a look here. बीच में एक फ्रेंड सन बन गई है और बाकी 4 फ्रेंड्स 4 डिफरेंट प्लैनेट्स बन गए हैं जो हमने 4 डिफरेंट डायमीटर का रेडियाई ड्रॉ करा था. ठीक है, ask your friends to move around the sun in anti-clockwise direction in their own orbits. Read it again. Ask your friends to move around the sun in anti-clockwise direction in their orbit. देखो ये इनके ऑर्बिट हैं और अपने फ्रेंड्स को बोलो कि वो सन के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें और वो भी सिर्फ उनके ऑर्बिट में. हर प्लैनेट का अपना एक ऑर्बिट है. क्लियर एवरीबॉडी? स्टूडेंट्स, बिसाइड रिवॉल्विंग अराउंड द सन, a planet also rotates on its own axis like a top. Yes, देखो यहाँ पर सब अपने अपने ऑर्बिट में सन के चक्कर काट रहे हैं. बच्चा, जब वो सब अपने अपने चक्कर काट रहे होते हैं सन के अपने ऑर्बिट में, ठीक है, वहाँ पर वो अपनी ही एक्सिस पे खड़े हुए भी चक्कर काटते हैं. ठीक है, दैट मीन्स दे आर रोटेटिंग लाइक अ टॉप, जो अपनी ही जगह पर खड़ा हुआ रोटेट करता रहता है. क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया? द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन इज इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन. और हमारी अर्थ भी करती है रोटेट अपने ही एक्सेस में, उसका जो टाइम पीरियड कितना होता है, इट इज़ ऑफ 24 आवर्स. क्लियर एवरीवन? Some planets are known to have moons or satellite revolving around them. Yes, देखो कुछ planets के पास अपने सैटेलाइट या हम उन्हें मून भी कह सकते हैं. जैसे हमारी अर्थ के पास अपना एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसे हम मून कहते हैं. क्लियर एवरीवन? Any celestial body revolving around any other celestial body is called its satellite. Like अर्थ के चारों तरफ उसका मून उसके चक्कर काट रहा है, तो ये हमारी अर्थ का क्या हुआ? सैटेलाइट हुआ. क्लियर? इसीलिए हम मून को, चांद को अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं. क्लियर एवरीवन? द अर्थ कैन बी सेड टू बी अ सैटेलाइट ऑफ द सन. यस, कह सकते हैं, क्योंकि एक सेलेशियल बॉडी दूसरे सेलेशियल बॉडी के चक्कर काटती है तो वो
सैटेलाइट ही कहलाती है. क्लियर? The earth can said to be a satellite of the sun, though generally we call it a planet of the sun. We use the term satellite for bodies revolving around the planet. Moon is a satellite of the earth. So, concept clear हो गया? Students, there are many man-made satellites revolving around the earth. These are called artificial satellites. Clear everyone? समझ में आ गया? And students, अब हम discuss करते हैं a very important part of this chapter which is going to define about Indian astronomy. कि ancient time में हमारे पास, हमारे देश के पास इतने फेमस, इतने रिमार्केबल वर्क करने वाले एस्ट्रोनॉमर्स रहे हैं. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस about Aryabhatta. Clear everyone? So students, the practice of astronomy in ancient India is mentioned in Rig Veda, which was composed about 4,000 years ago. Again, listen, 4,000 years ago. We already had composed it at that time. Clear? आज से 4,000 साल पहले. And it is mentioned in Rig Veda. अब वेद तो सब बच्चों को पता है ना, हमारे कितने वेद हैं? Okay? Many Indian scholars have contributed to astronomy. Students, one of the most well-known astronomer is Aryabhatta. ठीक है, जिसे हम हिंदी में आर्यभट्ट कहते हैं. ओके, द वर्क ऑफ आर्यभट्टा ऑन एस्ट्रोनॉमी कैन बी फाउंड इन हिज राइटिंग, दैट इज आर्यभट्टिया. ही रोट इट इन 499 CE, that is the common era, at the age of 23 years. कितनी जल्दी लिख लिया था इन्होंने. एट द एज ऑफ 23 ईयर्स उन्होंने अपनी बुक लिख दी थी. दैट इज नियर अबाउट 499 CE, दैट इज़ द कॉमन एरा. स्टूडेंट, इट इज़ अ रिमार्केबल पॉइंट कि इतनी कम एज में आपने एक बुक लिखी है जिसके अंदर आपने ऑलमोस्ट सब कुछ वो बताया जो हमें आज पता है. क्लियर अबाउट आवर सोलर सिस्टम. द डायमीटर ऑफ अर्थ as stated by Aryabhatta is close to its presently known value. Wow, it is remarkable. Disregarding to the popular view that earth is achla, immovable, yes, जो हिल नहीं सकती, जो चल नहीं सकती, ठीक है, उसको इन्होंने डिसरिगार्ड किया और इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया. आर्यभट्टा स्टेटेड दैट अर्थ इज अ स्फीयर एंड रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस. Clear everyone? Student, he estimate about the sidereal period of earth was 23 hours 56 minutes and 4.1 second, which is very close to the presently known value. Clear class? मतलब इतने टाइम पहले ही आर्यभट्ट जी ने पता कर लिया था कि हमारी जो अर्थ है उसका जो साइडरियल पीरियड है वो लमसम आज हम उसको 24 आवर्स मानते हैं, बट ही स्टेटेड दैट इट वाज 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4.1 सेकेंड. अमेजिंग. He also correctly stated that the moon and the planet shine due to reflected sunlight. Clear everyone? Student, he also gave a scientific explanation of solar and lunar eclipses. Yes, उन्होंने scientific reasons भी बताया लोगों को कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्यों होते हैं. When the shadow of earth falls on the moon, it causes lunar eclipse. चंद्र ग्रहण सब बच्चों ने देखा है ना. Student, when the shadow of the moon falls on earth, it causes solar eclipse. Clear everyone? Student, Aryabhatta also found distance between the earth and the moon which is close to the known value today.
So they are the remarkable works, remarkable discovery, remarkable studies of Aryabhatta that he had mentioned in his book Aryabhatiya, and that is remarkable. Clear everyone? So that is enough for today's video. In the coming video, we will discuss our solar systems, planets and other solar family members. Clear everyone? Students, take care of yourself and revise what we learned today. Thank you.